21 days ahead of the 2024 Mahabharat, the India partners are at loggerheads with the central agencies, while Delhi Chief Minister Kejriwal got no relief from the court, continues to remain behind bars. The already cash-strapped Congress is slapped with a fresh IT notice of 1,823 crores. Both the AAP and the Congress have played the victim card, saying they are being targeted by the BJP. आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजे। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊँगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। The Congress has called it tax terrorism. Listen to what was said by the party spokespersons. बीजेपी की क्या रणनीति है? 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, which shows the complete hypocrisy of the BJP, which is engaged in tax terrorism. ये कर आतंकवाद है। No one is immune from it. Not any member of any party or the party itself. उससे पहले की इनकम टैक्स जो है फाइल नहीं किए, पता नहीं क्या करते हैं। इनकी आमदनी तो खूब होती है। वो लगता है वो पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 2 रुपए नहीं है। उनका एक नेता है, उसके पास कांग्रेस का 350 करोड़ निकले, कहते उससे ले लो, उससे इलेक्शन लड़ लो। You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Let's quickly introduce the panel. Sanju Verma joins us, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Akashdeep Muni also with us, political analyst. Dr. Ranganathan, Dr. Nikul Patel, stay on. Sanju Verma, the Aam Aadmi Party is saying that the BJP is misusing agencies because you're scared, rattled by Kejriwal's popularity. The Congress is accusing you of tax terrorism. I will respond to both those pointed allegations, Pranesh. First and foremost, speaking of Kejriwal, repeatedly he's been denied relief by the law of the land. Point number 2, I always say in a money laundering case, the mala fide intent, a money trail and proceeds of crime are the 3 most relevant things. And the Supreme Court last October, a 2-judge bench led by Justice Sanjeev Khanna and Justice S.V.N. Bhatti categorically stated that a money trail of rupees 338 crore in the liquor policy scam has been tentatively established. Forget about what the various courts have said while denying relief to Kejriwal and his associates Manish Sisodia, Satinder Jain and Sanjay Singh, what have you. Let us talk about the CAG report. The CAG report ka khulasa was first made on Times Now. And the CAG is not a handmaiden of Narendra Modi or Amit Shah or the BJP. CAG under Part 5 of the Constitution is a independent statutory body, and it has categorically said that the liquor policy scam perpetrated, encouraged and abetted by the Delhi CM Arvind Kejriwal and his cronies has led to a more than 2,500 crore loss to the taxpayers of Delhi. And the most important thing is this. You know, till about a few weeks back, Kejriwal was saying liquor scam to hua hi nahi. And less than 24 hours back, in the court, he said, शायद मनीष सिसोदिया से सवाल करिए, जो कुछ हुआ उनके सामने हुआ, उनके पीएसी अरविंद को मालूम है क्या हुआ, एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णन को मालूम है क्या हुआ, शायद स्कैम हुआ भी होगा तो मनीष की जानकारी में होगा, which means that now he's decided to put Manish Sisodia under the bus, which is classic Kejriwal style of politics. And यहाँ जो कहते हैं कि मोदी जी डर गए, अरे भाई साहब, लोकसभा 2019 में बीजेपी had a 57% vote share in Delhi
We had 100% strike rate. We won all the 7 Lok Sabha seats from Delhi in Lok Sabha 2019. We will repeat that in 2024. The Aam Aadmi Party had an 18% vote share in LS 2019 from Delhi and did not win even a Okay. single seat. And the most important argument is this. Why is it that Kejriwal, who always portrayed himself as the Kattar Imandar, if he could take the resignations of Manish Sisodia, Satinder Jain from, the Tihar jail, saying कि नहीं moral high ground है, इनको resign करना चाहिए, by virtue of the same logic, आपने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया? Because the rule Dr. Muni? 585 of the Delhi jail manual clearly says, Rule 585 of the Delhi jail manual clearly says that Arvind Kejriwal cannot administer Delhi from the confines of the lockup. So when will Arvind Kejriwal take the moral high ground and actually put in his paper Dr. Muni, rather than trying to when make will this Sunita happen? Kejriwal into Rabdi 2.0? Yes, whenever you allow. all yours, sir. बोलिए. हाँ, Pranesh, today is a very sad day for your journalism, actually, for Times of India's journalism. Times of India has been vociferous against the scam that happened, the Air India scam, actually, which Praful Patel did. And Times of India also reported in May 7, 2011, till recently, vociferously against him. Today is a very sad day because Praful Patel has been. अब आप सुनिए, अब आप sad और happy बता रहे हैं अभी. Let me add to your joy. Now 1 minute. आप सुन तो लीजिए. Interrupt me. No, I am not Yes, interrupting now, you. brother, 1 this is minute. question I'll your tell you, sir. journalism if you interrupt Sir, me. 1 minute. Because you have not interrupted the BJP No, panelists. Now you're 1 minute. interrupting Dr. your- Muni, your channel, Sanju Verma your- was not talking go about the on. Times of India or the Times Group. I am Go not on. here. No, allowing you to mislead the viewer. You are only exposing yourself. Let me tell you, we Go on. report what happens in courts. If the agency has closed the case, what are we to do? We are not some investigating agencies. Parallel नहीं चलती हमारी. We have to report what goes on. When the Aam Aadmi Party became a national party, तो हम उनको global party नहीं बताएंगे ना. We will have to call up a national party. You don't know how this works, Dr. Muni. So देखिए, stick to प्रवेश the जी, topic we आपका are discussing, channel है, please, आप Dr. कभी Muni. भी- 1 minute. The Times of India, sir, नहीं, 1838 नहीं, तब की प्रवेश जी, established है. आपसे let me सर्टिफिकेट speak. नहीं चाहिए, Dr. Muni, please. No, मैं कोई नहीं होता हूँ सर्टिफिकेट. तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? ना मुझे चाहिए मैं कोई नहीं ना होता हूँ. ना नेटवर्क को मैं कोई चाहिए. नहीं होता, आप but यू ये स्टिक टू द एक केस. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ना कि आप सेंसर कर रहे हैं. सेंसर? सेंसर बोर्ड बन गए हैं क्या? आप रमेश एलिया सेंसर बोर्ड हो गया हो क्या? Oh my मेरे को God, बोलने तो this दो. guy is 5 rapid मिनट में वो beyond स्टार्ट तो करने दो. बड़ा हद हो गई यार. This guy is मतलब मुझे rapid स्टार्टिंग ही नहीं beyond करने दे रहे हो, आप मुझे This is रोक not रहे हो. fair. Debate डॉक्टर का मुनी, topic केजरीवाल मैंने का तो आपको topic केजरीवाल पे Allow सवाल to पूछा speak था. in the starting. आप कहीं और चले गए. वहां पे चलो, मैंने चलो, आपको छोड़ो, आईना छोड़ो. दिखाया तो अब आप बोल रहे हैं कि I have विक्टिम nothing to कार्ड speak. बोलने Thank नहीं you. दे सेंसर. Thank you. बोलिए. Thank you. Then go ahead, do your channel. Go ahead. I have nothing to speak. Sorry. I know you have nothing to say. Otherwise, you would have said it, Dr. Ranganathan. I mean, what does one आप do? ज्यादा जानते हो भाई, आप ज्यादा जानते हो. आप वॉइस लोअर कर देते हो, फिर आप बोलने लगते हो. आपका बोलने voice- नहीं देते हो. अगर आप बोलने नहीं दोगे तो किस प्रकार के जर्नलिस्ट हो यार आप? किस प्रकार के जर्नलिस्ट हो? कहाँ आपका वॉइस बंद नहीं किया, What is going on here? डॉक्टर मुनी? क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बार आपने voice डॉक्टर मुनी, क्या हो गया आपको? यार बोलने दो. स्टार्टिंग में रोका मत करो पहले 10 सेकंड में. अगर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन को बोलने दे रहे हो. भारतीय जनता पार्टी ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे कुछ नहीं बोला था. डॉक्टर मुनी, वी आर डिस्कसिंग अरविंद केजरीवाल एंड द अलेज्ड करप्शन. 1 minute. डॉक्टर मुनी, Dr. Muni, if you have anything to say on the topic we are discussing, 1 minute. Dr. Muni, let me make this clear. You have a problem. You have a problem. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साइट करना गलत हो गया क्या? हम साइट गलत नहीं हो गया. मैंने आपको बताया हाउ दिस वर्क्स. क्या हो गया आपको? आप रिसर्च करके नहीं आए क्या? आप मुझे रोकोगे तो कैसे होगा? कैसे बातचीत होगी? अरे सर, आप बोलिए. आप बोलिए. डॉक्टर मुनी बोलिए. प्लीज 30 सेकंड बोलिए, फिर मुझे रोक देना, फिर आप जो बोलना बोलो. ठीक है? Now I want to cite again the Times of India report of page 7, 2011, where it was reported how Praful Patel was involved in Air India scam. How after joining Bharatiya Janata Party, he was exonerated by CBI of all the scams that was
was against him. I have It was Times of India who reported also. No, Sanju Verma, let him make his point. Let him make his point, please. Fade us down. Only Dr. Muni speaks. Same thing happened with Naveen Jindal. How all the media channels and Bharatiya Janata Party reported about coal scam, and after he joined, and today the coal scam might go wherever we know. Today, Madhu Koda's wife, you remember Madhu Koda, friends? Madhu Koda was involved in 4,000 crore mining scam. It was Bharatiya Janata Party who took out rallies against Madhu Koda. But today Madhu Koda's wife is with Bharatiya Janata Party. This shows how clean they are now coming on to the CAG reports, which my friend was talking about. Non-submission of utilization certificates. This is 2022 Times of India report, where it was said that reported CAG in 2019 how there was a 42,000 crore loss to the exchequer in Maharashtra. I again want to tell about Bharatmala project. I also want to cite. अच्छा सुन लीजिए डॉक्टर मुनी, अब हो गया. We don't 1 minute. डॉक्टर मुनी, अब प्लीज अब आप सुनिए. Because 1 minute. I thank you for endorsing the Times of India. Now 1 minute. आपको Times of India पे बात करनी है. Times of India का रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं. अब आप इस पे भागिएगा मत प्लीज. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये, February 7, 2020. इसका हेडलाइन है 5 things अरविंद केजरीवाल डिड विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू. लेट मी रीड आउट. ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था. कंटेस्टिंग इलेक्शन, इन्होंने कहा था वी विल ओनली बी पार्ट ऑफ द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, वी डोंट वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. इनफैक्ट इंटरव्यू में बोला है टाइम्स नाउ के डॉक्टर मुनी. और दूसरा सुनिए, ये पॉइंट नंबर 1 है. उन्होंने बोला था आम आदमी पार्टी through though Anna Hazare was against the formation of a political party, he had initially agreed to support Arvind Kejriwal. Anna disbanded Team Anna, but what Kejriwal did with it for people to judge. Alliance with Congress, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था. अरविंद केजरीवाल ने बोला था. अब आप बैठे हैं एक दूसरे के, आप लोग दिल्ली में दोस्त हैं, पंजाब में एक दूसरे. अभी सुन लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है, काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, अब सुनना पड़ेगा आपको. और सुनिए, कार्स एंड बंगलोज, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी बिकॉज अरविंद केजरीवाल सेड इट इन एज मेनी वर्ड्स. डॉक्टर रंगनाथन वुड रिमाइंड यू मोर. ही ऑल्सो रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया. डॉक्टर रंगनाथन, क्विकली. I don't know what has happened. Dr. Muni, please, you've taken 8 minutes और अभी डॉक्टर निकुल और हमारा चांस भी नहीं आया. प्लीज गिव अस. थैंक यू. The debate was on Kejriwal. How on earth has Dr. Muni managed to, obviously deliberately, derail the debate and take it to Praful Patel? I want to ask him a simple question when he's doing this whataboutery. Dr. Muni, please tell me, in which party is Mr. Amanatullah Khan? Which party does he belong to? Please tell me. Aam Aadmi Party. Correct. Do you know that when he was in Congress, Arvind Kejriwal demanded the arrest of Amanatullah Khan? Now he is in Aam Aadmi Party. इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं. मैं कहूंगा. हाँ, मतलब पर आप सोच लीजिए फटाफट क्या कहेंगे. अरे केजरीवाल तो कह रहे थे इसको अरेस्ट करो, ये तो आम आदमी पार्टी में आ गए. ऐसे ढेरों इंस्टेंसेस हैं. सो प्लीज do not talk about the crimes and misdemeanors of others to excuse your crimes and misdemeanors. The point was on Kejriwal. Now, Pradesh, can I please have a minute? Sir, we're completely out of time. Dr. Ranganathan, 5 seconds is all I can give you. 5 seconds. Okay. For Aam Aadmi, the laws and the rules should be same as for anyone. Kejriwal is Aam Aadmi. Kejriwal did not answer to 3 summons. After that, by law, he has to get a non-bailable warrant. But even then, ED waited till 9 summons were given. So there is absolutely nothing wrong in his arrest. I thank all of you for joining us, and Dr. Muni, especially to you. Continue reading the Times of India and endorsing us, sir. But उसको पूरा पढ़िए, यहाँ से वहाँ तक, all sides पढ़िए. ऐसे don't jump the gun, Dr. Muni, please. And come prepared, better prepared. Viewers, thanks for watching. You were watching the News Hour at 9. Stay tuned.